Hello everyone, welcome to another episode of the podcast. Today I'm sitting with my cousin Naufil, and today we're sitting in the city of Paris. Just FYI, it is as beautiful as they advertise it to be. So Naufil, thanks for being here. Thank you. You said something yesterday actually that I really liked. I quoted you on it. You said, I think they observe each other less. And you said that about Europeans. I liked that. What do you mean by that? इसमें अच्छा ये पसंद है तुम्हें बात? Yeah, I like that you said that. What did you mean by that? अच्छा इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी जजमेंटल निगाहें होती हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जबकि यूरोप में कोई फिक्र नहीं कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. अब ऑल्दो इसका फ़ायदा भी है कि जैसे ख़वातीन जो हैं बहुत इनसिक्योर फील करती हैं पाकिस्तान में इसी वजह से कि बहुत सारी आइज़ आपको देख रही हैं. यूरोप में दे फील मोर फ्रीडम. बट ऑन द अदर हैंड इसका नुकसान ये है कि nobody cares about you in यूरोप. हर कोई अपनी लाइफ में बहुत मगन है. पाकिस्तान में ऑल्दो ऑब्जर्विंग आइज़ बहुत है, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग हेल्प भी करने आ रहे होते हैं. Yeah, there's two sides of that coin as you mentioned, but the first one that I thought about was the positive one, that when you said they observe each other less, I thought you meant they judge each other less. Yeah, you know, that's what I meant actually. Yeah. And I like that, and I thought that was an interesting observation you made, because you moved to Germany and that's what you saw. But yeah, and I feel that way walking in Paris too. Paris is infamous for people saying that the people of Paris are kind of mean, but in my experience everyone was really nice, and I didn't feel like I was judged or anybody was observing me in a weird way. How do you feel about it? But I'm just a tourist. How do you feel about it living in Europe? So अगर स्मॉल सिटीज़ की बात करें तो सारे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं जो तुमने कहा, क्योंकि ये बड़ा सिटी है. पेरिस इज़ वेरी इंटरनेशनल सिटी. तो ऑफ कोर्स जो आप यूरोप का जब आप जिक्र कर रहे होते हैं उसका मतलब होता है कि नॉट जस्ट बिग सिटीज़ बट स्मॉल सिटीज़ एज वेल. एवरेज क्या बिहेवियर है लोगों का. अगर आप बड़े सिटीज़ की बात करें, इट इज़ एज गुड एज एनी इंग्लिश स्टेट, एनी यूएस स्टेट. आपको सब इंग्लिश में बात करते हुए दिखाई देंगे, वही उनकी कल्चरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ होंगे. दे विल बी वेरी ओपन टू फॉरेनर्स. मगर अगर आप किसी छोटे शहर चले जाएं तो उधर आपको थोड़ा रेसिज्म देखने का और स्केप्टिकल आइज़ लोगों की दिखेंगी. Yeah, that's a good point. Do you think that's just the nature of the big city, of any place, that it just maybe it melts that away from someone, huh? Yeah, definitely. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हर किसी के अंदर पैदा हो जाती है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की. Yeah, I was surprised by how many Muslims that we saw in Paris. I mean, they're literally everywhere. Especially Jummah. Yeah, Jummah was crazy. It was way too many people. Yeah. Another thing I actually wanted to share to the audience that I was telling you was, I feel like Paris is Canada without AC. I mean, there's no AC in so many places, and it really shocks me. But yeah, like that's just something. And I guess that's all of Europe, right? They don't really use AC that much. I think ये ऑब्जर्व मैंने किया कि ये कितना बॉदर कर रहा है तुम लोगों को. me in particular. तुम लोगों को कितना बॉदर कर रहा है. हमें तो आदत हो गई है अब. इवेंचुअली 1 साल 1.5 years हो गए यहाँ पे, तो बगैर एसी के गुजारा करने की. Yeah. I just thought that was an interesting difference. But yeah, Paris is just like New York City. It's just like Canada to me, but without the AC and the big buildings. What else do you think of the whole experience that you had so far in the past couple of days? Everything that's happened? Yeah, I think first trip में मैं बहुत excitement से शायद नहीं, first trip में मुझे ये था कि I need to record memories, कि दोबारा आना हो ना आना हो पता नहीं. कुछ पिक्चर्स खिंचवाई, अपनी आसपास की जगहों की खींची. इस बार I was more into absorbing the experience कि okay last time मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया था शायद, एंड
बहुत सी ट्रांसपोर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है. इस बार मैंने थोड़ा और समझने की कोशिश की हाउ इज़ इट वर्किंग. इतने सारे मेट्रो है, ट्रेन है, Yeah, बस getting to है, Versailles, that was so हाँ. complex. तो Yeah. इस बार मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं बड़े सिटीज़ में खुद अकेले नेविगेट अराउंड कर सकता हूँ. Yeah, and that's a great confidence to have. Mm. And there's 2 points I want to go off on that from, which was when I visit a place more than once, I become more of an observer. You know, I become less jumpy and excited. You take the back seat and now observe it Yes. from a third point of view, maybe. Yeah, and I think that's advantageous in its own ways. But another thing was, we were talking earlier, and I was telling you, like, when I go to a place, I love to take pictures, and it's become less about social media for me now, but I'm still in the habit of taking pictures, making videos every second. And you'll take a picture here and there, but of yourself even, maybe you won't. And what's with all that? Why don't you do that? What's your philosophy? मुझे हमेशा से एडिक्टिव चीज़ों से बचने की थोड़ी आदत है. फॉर एग्जांपल मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ Emily in Paris. हाँ, मुश्किल से कोई स्टार्ट करता हूँ. एमिली इन पेरिस देखिए, बट बहुत ही मुश्किल से. कोई अच्छी भी लग रही हो ना तो मैं कहूँगा नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इट बिकम्स एडिक्टिव. पे अगली एपिसोड. तो अमूमन बचपन से थोड़ा एम्बिशियस रहा हूँ, टाइम की हमेशा कमी रही है, तो मैं इस तरह की चीज़ों से बचता हूँ जो कि मुझे लगता है एडिक्टिव हो और फिर मेरा टाइम वेस्ट करेंगी. तो फॉर एग्जांपल गेम्स और सीरीज़ वगैरह. पिक्चर्स का भी शायद इस वजह से मेरे अंदर आया कि मुझे लगता है कि अगर मैं पिक्चर्स वगैरह लूँगा देन आई विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट maintaining my own online presence, and then it becomes addictive that you want to make your Instagram more prettier and prettier every day. It's like you have to keep your persona alive. Yeah, no, that's a great point. And it's true. I think pictures especially, they can be really addictive. It's a real thing. Yeah. Okay, let's. Yeah, I wanna respect your time, you know. But thanks for joining me, and I appreciate the insight. Until next time, inshallah. Sure, inshallah. From Paris. Okay, thanks, Omer. Thank you.